Forming is also one of the manufacturing process, right? So it is also one of the manufacturing process among other processes like casting, like machining. We have seen welding, and now we are going to understand the forming, right? So let's first establish a difference among all these things. Whenever I'm talking about the casting process, what we have to do कि हम यहाँ पे raw material को liquefy करते हैं, ठीक है, and then we allow to cool in a specific pattern, correct? So by this way हम liquid को melt करते हैं और उसको एक specific desired shape में हम इसको convert करते हैं, right? In machining what we have to do कि कोई प्रोडक्ट है उसको हम कटिंग के थ्रू हम उसको एक डिजायर्ड शेप में देते हैं, करेक्ट? व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग इज बेसिकली अ जॉइनिंग प्रोसेस, करेक्ट? इट इज अ जॉइनिंग प्रोसेस एंड विद द हेल्प ऑफ टू मेटल प्लेट्स को हमने ज्वाइन किया और उसको वेल्ड किया बाय different welding process, right? So that is one of the way. So now what is forming? So in that way we need to understand what is forming. तो अब हम यहाँ पे forming explain करेंगे and we'll see कि how this term is being defined, right? So it is also known as, whenever I'm talking about the forming, so we are more concerned upon the metal forming. Okay, so what is forming? ठीक है, forming is a method in which the desired shape and size are obtained through plastic deformation. So whenever I'm going to write this definition, that forming is the process. Forming is the process in which desired shape and size are obtained through the plastic deformations, right? So it is always better you write it with me, so your notes will also be prepared accordingly. Okay, so the term comes as plastic deformation, ठीक है? So plastic deformation of a material, ठीक है? तब ये plastic deformations का मतलब क्या होता है? To understand the plastic deformation, we need to first understand the stress strain curve. To understand the plastic deformation, we need to first understand the stress strain curve. So this is your stress and this one is your strain, correct? तो हमने इसमें कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की है, विल एक्सप्लेन कि सपोज एक माइल्ड स्टील का हमने जो है एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया, तो व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, करेक्ट? ओके, now we have different points, so I'll not explain all the points. This is the first point which is defined as a proportional limit. This is the elastic limit. This point is defined as upper yield point and this point is defined as a lower yield point, correct? So I'll rate it A, B, C, D, correct? Now we just define two zone basically. From this elastic zone we just defined into two zones. Okay, B is a point, B is a point which is defined as elastic limit.
नाउ लिसन केयरफुली, एंड बी ऑनवर्ड्स, ठीक है, बी ऑनवर्ड्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इट इज डिफाइंड एज अ प्लास्टिक रीजन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका ये इलास्टिक रीजन होगा अंडर दिस लाइन, और अब एंड बियॉन्ड दिस लाइन इट इज डिफाइंड द प्लास्टिक रीजन। एक सिंपल सा इसमें समझने की कोशिश करो कि प्लास्टिक रीजन और इलास्टिक रीजन का क्या मतलब है। कि जब हम इलास्टिक लिमिट्स की बात करते हैं एंड वी रिलीज लोड, व्हेन वी रिलीज लोड, बॉडी ब्रिंग बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट, बॉडी ब्रिंग बैक इट्स ओरिजिनल पोजीशंस, राइट। तो दैट इज द फिनोमेना, और इसी को हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। बट जैसे ही हम प्लास्टिक लिमिट की बात करते हैं, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्लास्टिक लिमिट, इसका क्या मतलब हो रहा है कि द बॉडी acquired body acquired न्यू डायमेंशंस, ठीक है। न्यू डायमेंशंस का मतलब क्या है कि सपोज आपका एक एक ब्लॉक पीस है और आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, ठीक है, इट विल shape in a different dimensions, ठीक है। now this having new length L dash, this is earlier of original length L। तो आपने क्या देखा कि with the help of this black line आपने एक green line में convert किया, तो this is a new product, this is being a new product। so this will achieve with the help of plastic deformation। plastic deformations का मतलब क्या है कि now your body exists in a plastic region, और प्लास्टिक रीजन का मतलब ये हो रहा है कि वो अपनी नई डायमेंशन में एक्वायर हो चुका है। सो बेस्ड ऑन दिस फिनोमिना वी अचीव, वी हैव डिफाइंड दिस process, so that is why it is commonly or known as a plastic deformation process। now we can see that the stress induced, the अब यहाँ पे एक important point क्या निकल के आता है कि the stress induced, the stress induced, अब अगर आप इस डायग्राम को देखने की कोशिश करोगे तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, आपको कहाँ तक स्ट्रेस लेके जाना है और आपकी बॉडी को कितना स्ट्रेन लगेगा, सो दैट कैन बी डिफाइंड, ठीक है। तो बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि द स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द स्ट्रेस इंड्यूस्ड during the process, the stress induced during the process are greater than, so now ये वैल्यू किससे जानना चाहिए, greater than the yield strength, right, greater than the yield strength, right। so this is the point, like we have already told you, this is your yield point, upper yield point, lower yield point, right। so your point should be greater than yield point। yield point का मतलब है कि वो एक shape acquire कर रहा है, ठीक है। so its value should be greater than the yield strength, but less than the फ्रैक्चर, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है एक शेप को फॉर्म करना, तो अगर हम उसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इट विल ब्रेक, तो दैट इज द
फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल। तो ये हमेशा याद रखना है कि हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए फोर्स के एप्लीकेशन की। इट शुड बी above the yield strength but less than the fracture, correct? So I'll just give you some of the example ki these are the examples जिसके मेथड से हमको समझ में आना चाहिए कि लाइक रोलिंग, ठीक है, रोलिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस। सिमिलरली वायर ड्राइंग इज also one of the process. Then extrusion is also one of the process. So these etc. These are the manufacturing process which is to be used in this one, right? Now clear a class? Now this is, जब हम फॉर्मिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो इट हैज बीन कैटेगराइज इन टू कैटेगरीज, ठीक है? सो इट इज बीन डिवाइडेड इनटू, यू कैन से डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब हम स्लोली वन बाय वन ये कैटेगरीज को डिफाइन करते जाएंगे। द फर्स्ट वन इट इज डिफाइंड एज अ बल्क फॉर्मिंग, राइट? And the second one, that one is defined as the first, and second one is defined as your sheet metal forming, right? So difference between these two are in sheet metal forming your metal thickness is to be less than 5 mm, correct? And your bulk forming मतलब आपका rolling हुआ, wire drawing हुआ, extrusions हुआ, so these are the process which comes under bulk forming. And sheet metal forming कि आपका जो metal thickness है, sheet metal का जो thickness है, metal thickness है, that is to be less than 5 mm, correct? So we have segregated in these two conditions. Now up to this point it is a general overview of all of the forming process. To start with the categories, so forming has been categorized. Now again, forming has been, you can say forming can be classified into two categories, right? Into two categories. कोई मुझे, so forming can be classified in two categories. The first category which is known as a cold working, which is known as a cold working, and second one it is defined as a hot working, correct? जब भी हम कोल्ड वर्किंग की बात करेंगे हम एक्सप्लेन करेंगे कोल्ड वर्किंग का मतलब बिलो recrystallization temperature, below recrystallization temperature. एंड हॉट वर्किंग का मतलब हो गया above recrystallization temperature. इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आया कि बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन एंड अबव रिक्रिस्टलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, द प्रोडक्ट, ठीक है? तो आप प्रोडक्ट किसी रॉ मटेरियल से क्रिएट करते हो, क्लियर है? अब ये रॉ मटेरियल जो है इसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर्स होगा, प्रोडक्ट का भी ग्रेन स्ट्रक्चर्स वही होगा। सो इट मींस दैट जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, जो क्रिस्टलाइजेशन स्ट्रक्चर्स होंगे दैट विल रिमेन सेम एज अ प्रोडक्ट वन, करेक्ट? बट इन हॉट वर्किंग कंडीशन
product conditions, here we just write remain same. ठीक है. Now in hot working conditions जो है new crystals form. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा किस टाइप के क्रिस्टल्स के फॉर्मेशंस हो रहे हैं, किस तरह से वर्किंग कंडीशंस को डिफाइन हो रही है. बेस्ड ऑन दैट विल define the chemical and physical properties of the product. So I'm going to explain you the characteristic of the metal. Characteristic of metal working conditions. ठीक है. The first point that I'm going to write that due to cold working, always remember, due to cold working, product will be stronger. Class, these are the very important points. ठीक है. If you have any doubt, just raise it. Due to cold working product, right? So just here write कि cold working product. ठीक है. Cold working product will be stronger than hot working, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोल्ड वर्किंग कंडीशंस को यूज करते हो तो उनकी जो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर हॉट वर्क प्रोडक्ट, राइट? रीजन, बिकॉज इन कोल्ड वर्किंग की कंडीशंस की बात करेंगे, जब हम कोल्ड वर्किंग कंडीशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है, so we see that there is a plastic deformation. ठीक है. this plastic deformations की होने के वजह से we find a strain hardening effect. क्लास क्लियर है कि आपका कोल्ड वर्किंग प्रोडक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर देन हॉट वर्किंग प्रोडक्ट बिकॉज इन कोल्ड वर्किंग प्रोडक्ट व्हेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस occur there is a phenomena which is known as a strain hardening effect, and because of this strain hardening effect the product of cold working is stronger as compared to hot working conditions. Clear? Now ये point, next important point, in hot working, the second point is in hot working since there is scale formation, right? अब ये स्केल फॉर्मेशंस क्यों होगा? बिकॉज आपका प्रोडक्ट हॉट कंडीशंस में है, व्हेन यू हीट इट तो वो जो एटमॉस्फेरिक गैसेस उसमें इन्वॉल्व होंगी तो उसको बनाएंगी मेटल ऑक्साइड्स, एंड इट विल बी इन अ यू कैन से कि वाइट कलर का एक कोटिंग बन जाता है, ठीक है, एंड जब आप उसको हैमरिंग करते हो ना तो इट विल ब्रेक इट, तो वो जो है स्केल फॉर्मेशन होता है. तो इन हॉट वर्किंग कंडीशन सिंस देयर इज स्केल फॉर्मिंग सरफेस, so surface finish is better in cold working product because
आपका यहाँ पे कोई स्केल फॉर्मेशंस नहीं होता है बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज लेस देन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड देयर इज नो केस ऑफ मेटल फॉर्मेशन, मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्मेशन. Correct? Now, third important point, since in cold working, since in cold working, there will not be any shrinkage. There will not be any shrinkage. अब ये श्रिंकेज टर्म क्यों आया? क्योंकि आपका जब हीट करते हो, ठीक है, तो हीट करने के बाद जब चीजें सॉलिडिफाई होती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन इट माइट पॉसिबल कि देयर इज सम वॉल्यूम श्रिंकेज, इट इज टू बी देयर. ठीक है, तो सिंस इन कोल्ड वर्किंग इस टाइप का श्रिंकेज नहीं होगा, सो you will achieve better dimensional accuracy. Better dimensional accuracy, right? In cold working products, always remember. Now next point, that is the fourth one, कि for hard and brittle material. अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, listen carefully. अब हम क्या बोल रहे हैं? for hard and brittle material. ठीक है, जैसे ही ये हार्ड और ब्रिटल मटेरियल का टर्म आया तो इसके मतलब आपके सामने माइंड में आना चाहिए कि अगर ये बॉडी हार्ड है तो वी नीड एक्सेसिव फोर्स. ठीक है, अगर आप कोल्ड वर्किंग प्रोडक्ट की बात कर रहे हो तो आप कोल्ड वर्किंग प्रोडक्ट को जो है अचीव कैसे कर रहे हो? आपको उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि उसमें एक्सेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हो टू कन्वर्ट इट इनटू अ सम प्रोडक्ट. करेक्ट? So we can write for hard and brittle material, excessive load will appear, right? Will appear किसमें? In cold working conditions में. In cold working process. ठीक है, so the process, अगर हम इस process की conditions की बात करें तो can we write कि so the process will be uneconomical, right? बिकॉज आपको लोड ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में आपका जो टूल्स है दैट आल्सो टू बी ऑफ हायर ग्रेड टूल्स. ठीक है, एंड इन सच केस हॉट वर्किंग इज यूज्ड फॉर सच मटेरियल्स. ठीक है क्या? So this, due to excessive, the last point, that is the fifth one, what I am explaining, due to excessive cold working, due to excessive cold working defects, like internal cracks may appear in cold working, right? That is also one of the you can say the drawback of working in cold working conditions. Okay, also this process is limited,
कोल्ड वर्किंग कंडीशंस की बात कर रहा हूँ. ऑल्सो द प्रोसेस इज लिमिटेड टू लो स्ट्रेंथ कंडीशंस. मतलब जिसका स्ट्रेंथ कम है उसी पे ही हम कोल्ड वर्किंग कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल कंडीशंस होगा, बिकॉज उसके रेस्पेक्ट में हमें उतना ही टूल्स को और टूल्स के मटेरियल्स को डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो लिमिटेड टू लो स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल्स. लो स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल्स. ठीक है. अदरवाइज पावर रिक्वायरमेंट गोज अप. याद रखना. Just write it. That is otherwise power requirement goes up. So simply the main, I'm just going to write the main objective. The main objective of metal working. ठीक है. Metal working analysis is to predict the stresses acting during metal deformation. Now this is important. Stresses acting during metal deformation, right? Then when we know the metal deformation, तो consequently हम क्या identify करना चाहते हैं? We define the forces. ठीक है. We define the forces which must be applied. ठीक है. तो आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रेस को कैलकुलेट क्यों करना है? सो दैट कि आप फोर्सेस को कैलकुलेट कर लो. और जैसे ही आप फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपके पावर रिक्वायरमेंट भी डिफाइन हो जाती है. राइट. तो द वर्किंग लोड डिटरमाइंस द पावर रिक्वायरमेंट. तो अब आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि आपका जो वर्किंग लोड है, राइट, अगर हमने बोला कि नाउ दिस इज योर वर्किंग लोड. वर्किंग लोड का मतलब वो जो पावर है, जो फोर्सेस जो आप कैलकुलेट करते हो. सो वर्किंग लोड डिटरमाइंस व्हाट? वर्किंग लोड डिटरमाइंस द पावर रिक्वायरमेंट. बराबर है. आपको कितना पावर की रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वर्किंग लोड्स. राइट. एंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर पावर पता है तो आप साइज ऑफ द इक्विपमेंट को भी डिफाइन कर सकते हो. राइट. जो कि एक नेसेसरी आइटम्स है. तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या? एंड लास्ट वन क्या था कि measurement of forces also gives an indication. Measurement of forces also give an indication of the efficiency of the process. Efficiency of the process. Nimesh? Okay. So now I'm going to explain you the each and every condition, and based on that condition, what should be the value of sigma, right? The first thing, in uniaxial tension, right? In uniaxial tension, or you can say the compression.
when we have a uniaxial tension or compression, the yield stress, can the yield stress can easily be defined. Yield stress can easily be defined, and its value read from the stress strain diagram of the material. From the stress strain diagram of the material. ठीक है, that is one thing. क्लियर? अगर आपका यूनिएक्सियल टेंशन और कंप्रेशन है तो आप सिंपल जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है उसके बेसिस पे जो भी वैल्यूज होगा यू कैन इजीली कैलकुलेट, आप उसको ग्राफ के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो या देख सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज if the material behaves like that of elastic plastic, if the material behaves like, मतलब आपका जो है अभी जो मटेरियल की कंडीशन है like that of the elastic, first your material is an elastic, then it is your elastic plastic, then yield strength. ठीक है, अब देखो elastic and plastic, then yield strength. Yield strength can be considered as mean flow stress or nominal stress, or nominal stress, or the stress at which materials क्लास से 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट.
Class, am I audible? Please confirm me. Class, please confirm me that am I audible Yes, to sir. everyone? Audible. Yes, sir. Great. तो मेरा बेटा जाग गया था ना, तो वो परेशान कर रहा था, तो मैं रूम में आ गया। चलो, कहाँ पे थे? कोई मुझे बताएगा थोड़ा सा? गो, एनीवन कैन एक्सप्लेन? ऋषिकेश, आप मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? हितेश, 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 एम आई ऑडिबल? हितेश, हाँ सर. हाँ, एम आई ऑडिबल राइट? Yes. ठीक है। तो आई एम नॉट टेकिंग टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको ये समझना है कि ये दो पॉइंट्स क्या है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इन अ यूनी एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन, ठीक है, जब आपका एक यूनी एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन है तो जो यील्ड स्ट्रेंथ की, जो यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू होगी, विच कैन बी रीड फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और उसके बेसिस पे हम ये वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट? सिमिलरली if the material behaves like that of the elastic plastic, ठीक है, मतलब आपका पहला इलास्टिक है, देन प्लास्टिक रीजन है, तो जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी कैन बी कंसिडर्ड एज अ मीन फ्लो स्ट्रेस। मतलब अब आपका जो एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है दैट कैन बी कंसिडर इन दिस केस, राइट? तो अभी मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। आई एम जस्ट फर्स्ट राइट इट, देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम एंड ऑन दैट बेसिस विल डिफाइन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है। क्लास, अभी तक ये पॉइंट क्लियर है क्या सबको? जस्ट टेल मी वन फर्स्ट। क्लास, कैन यू प्लीज टेल मी that up to this point it is clear to you all? Yes, sir. Clear. ठीक है, ग्रेट। तो देखो, अब हमें क्या करना है, हमको एक एवरेज वैल्यूज को डिफाइन करना है। यस और नो? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, like this sigma f, this is defined as a mean flow stress। तो हमने यहाँ पे sigma f डिफाइन किया, जो कि आपको डिफाइन करता है एक वैल्यूज पे, विच इज डिफाइंड एज k epsilon n। दिस इज द कर्व, दिस इज द रिलेशन ऑफ कर्व जो कि ये फॉलो कर रहा है, राइट? सो एट दिस पॉइंट वी कैन डिफाइन सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू k epsilon n। अब ए क्या है आपका? स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट्स है, ठीक है, स्ट्रेन हार्डनिंग कोफिशिएंट, जिसकी यूनिट सेम होगी जो आपकी स्ट्रेस की होगी, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज डिफाइंड एज योर ट्रू स्ट्रेन, राइट? एंड व्हाट इज n? इट इज डिफाइंड एज स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स, स्ट्रेन हार्डनिंग इंडेक्स। सो आई बिलीव दिस वन इज क्लियर कि ये जो कर्व फॉलो हो रहा है, दिस कर्व फॉलो दिस रिलेशन, ठीक है। तो फॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमको पता चला कि दिस एप्सिलॉन 1 इज द पॉइंट जहां तक हमको लेके जाना। इज दैट क्लियर? So for average value we need to integrate this values, and this integration is being defined, that's sigma naught बोलो, चाहे sigma mean flow stress की values बोलो, right? And which is to be defined as 1 upon epsilon, this limit is 0 to epsilon sigma f, right? This values upon d epsilon, correct? When you place it here, it will defined as 0 to epsilon 1 k of epsilon n into d of epsilon, correct? Now when you integrate it, right,
when you integrate, after integration, you will find कि sigma naught, which is also equals to sigma mean flow of stress, and this equation term as K epsilon n upon n plus 1. So this is the average value. This is the average value, right? कि आपको बस ये कैलकुलेट करना है कि what is your true strain, and other than if it is given, you can find out कि what is the average value of this strain hardening effect. So let us understand the concept of first true stress. True stress and true strain, right? So what is true stress? So because stress, अगर हम stress को यहाँ पे define करने की कोशिश करें, if we define the value of stress, so we know that stress is being defined, that is sigma, which is a force per unit area, right? ट्रू स्ट्रेस की अगर जब हम बात करते हैं, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि जब हम इसको ट्रू स्ट्रेस का नाम दिए, तो ट्रू स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ कि वेयर ए, अब हम जब ट्रू स्ट्रेस की बात करते हैं तो ट्रू स्ट्रेस में वेयर ए इज द एक्चुअल एरिया, is the actual area। अब ये एक्चुअल एरिया का मतलब क्या है? जब भी हमने यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यूज को डिफाइन किया था तो हमने बोला कि भाई हमने एक फोर्स अप्लाई किया P, और उसके करस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था, दैट इज डिफाइंड एज ए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वी आर कंसिडरिंग, हमने क्या कंसिडर किया कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वी आर कीपिंग दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कांस्टेंट थ्रू आउट, करेक्ट? बट होगा क्या, अब आप जब इस पे फोर्स अप्लाई करोगे और ये डिफॉर्म होगा, सो दिस डिफॉर्मेशन कैसे डिफाइन होगा कि भाई ये डिफॉर्मेशन, अगर हमने फोर्स लगाया है टेंसाइल बॉडी का, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस विल इलोंगेट। तो जैसे ही ये इलोंगेट किया है, यू कैन सी दैट दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो टू बी चेंज। Yes, and earlier this is A, now this is A1. So, but normal case में हम stress का क्या कर रहे थे? We are considering keeping cross sectional area A, right? But here in this case, whenever I'm talking about the true stress, your A is always reflecting this actual area, उस particular moment, correct? And you can see that upon deformation, this cross sectional area is decreasing. So we can say that, we can simply written as कि where A stands the actual area, or instantaneous area which supporting the load. So we can say that with supporting the load, right? Okay, now with respect to that, let us find out the true strain. With respect to that, we define the true strain. तो ट्रू स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल और लॉगरिथमिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। यू कैन से दैट, और नेचुरल या लॉगरिथमिक स्ट्रेन, ठीक है? सो विच सिंबलाइज एप्सिलॉन आपका, ठीक है? एंड दिस कैन बी डिफाइंड एज, अब आपको स्ट्रेन जब हमने डिफाइन किया तो चेंज इन लेंथ अपॉन डिफॉर्मेशन, ओरिजिनल लेंथ, आपका जो नॉर्मल स्ट्रेन ई था वो क्या था? चेंज इन लेंथ, change in length
upon original length, right? So with respect to that, this is your, with respect to that, अगर हम true strain define कर रहे हैं तो instantaneous elongations की बात करेंगे, तो we defined it कि आपका original length L0 था, आपका change हुआ L, and for that value we can define as dl by, correct, and this can be written as ln L by L naught. तो जब आप इसको explain करोगे, so this can be written as, आपका true strain can be defined in this particular manner. Is that clear to you all? Now this is being defined with respect to length. This is being defined with respect to, now we first, now this is being your engineering strain, okay? This is being your engineering strain, this is being your true strain. So we need to set up a relation. So always remember, for true strain is equals to ln 1 plus E, right? So this is the formula for your true strain with engineering strain, right? Always remember. One addition thing it is, for a small values, अगर हम consider करें तो we, for a small values, your engineering strain is equals to your true strain, and for any other cases it should be written in this way. तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई इंजीनियरिंग स्ट्रेन का ट्रू स्ट्रेन के क्या रिलेशन है, यू कैन फाइंड इट इन दैट पर्टिकुलर मैनर. Now moving, the first point that we need to understand, the first thing in the previous, in this analysis, always remember, in this analysis your elastic strain, right? Whenever I write elastic strain, आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि elastic strain क्या होता है, right? So इसका मतलब up to this point it is defined as your elastic. Up to elastic limit it is defined as your elastic strain, correct? Elastic strains are neglected, right, as compared to plastic strain, right? Now the second important point, right? We need to understand, first we need to understand the difference between plane strain, okay? Whenever I'm going to write plane strain, it is defined as von Mises, right? Achha, von Mises can also be known as your maximum distortion criteria, right? So these are the concept of theory of failures, maximum distortion energy criteria, correct? So always remember कि जब भी हम plane strain की बात कर रहे हैं, तो plane strain depends on your maximum distortion energy criteria, correct? Now and plane stress and the plane stress, ठीक है? तो ये प्लेन स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेस का हाइपोथेसिस, करेक्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्राइटेरिया.
मैक्सिमम shear stress क्राइटेरिया, करेक्ट। अब मेरे को एक बात आप लोग बताओ, ये प्लेन स्ट्रेस जिसको हम थ्योरी ऑफ फेल्योर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्यों आया?